तो ये था हमारा क्वालिटी एंड सिक्स सिग्मा, लाइक हाउ इट इज रिलेटेड. After that, let us discuss about what do we mean by the Six Sigma. So to understand this, Six Sigma, let us, separate it out, Six and Sigma. So let us first understand this Sigma. Sigma is नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन. जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने में आता था, तो उस टाइम पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन करके एक टर्म था, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते थे, ये ग्रीक लेटर में. ठीक है. सो बेसिकली ये डिनोट क्या करता है? एवरेज डेविएशन अराउंड द मीन. ठीक है. सो हमारा एवरेज ये है, उसके आजू बाजू में कितना वेरिएशन है वो बेसिकली सिग्मा से, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से हम डिनोट कर सकते हैं. एंड यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं या हम ऐसा सुनते हैं कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम इज लेट्स से 10 मिनट्स प्लस और माइनस 2 मिनट्स, वेयर दिस 10 मिनट्स इज नथिंग बट द एवरेज and this 2 minutes is nothing but your deviation or the standard deviation, you can say, because it is having the same unit. Like here also it is in minute, here also it is a minute, so it is a standard deviation basically we are talking about. हम पार्ले जी का बिस्किट भी खाते हैं, तो उसमें लाइक बच्चे थे तब से खा रहे हैं, तो उसका पैकेट भी आप देखेंगे तो उसके पैकेट पे लिखा होता है कि लेट्स से 100 gram plus or minus let's say 5 grams. Now what do we mean by this 100 grams? So that is the mean average weight of the packet, and this is what, like plus or minus 5 grams. What is that? That is nothing but the standard deviation. Now this is the formula for that, but you don't need to worry about this formula, क्योंकि हम इसको बाद में हम देखने वाले हैं. और थ्रू आउट दिस एंटायर 8 days ऑफ कोर्स मेरा फोकस फॉर्मूलाज के ऊपर ज्यादा नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि ये फॉर्मूलाज आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना कि सिग्मा की फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है, देन यू विल बी एबल टू गेट द फॉर्मूला. ठीक है. बट मेरा पर्पस ये रहेगा कि ये सिग्मा का पर्पस क्या है, उसको क्यों निकाला जाता है, एंड देन व्हाई वी आर यूजिंग दिस. सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है वो मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, टू अंडरस्टैंड इवन दिस मीन, मीडियन, मोड, एवरीथिंग. हर जगह पे मैं ज्यादातर बात करूंगा इसकी एप्लीकेशन के ऊपर. ठीक है. आई विल नॉट बी फोकसिंग मोर ऑन द फॉर्मूलाज. मैं आपको इवन आई विल नॉट आस्क यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज. हाँ ठीक है, किसी को अगर याद रखना है देन इट इज फाइन. अदरवाइज प्रैक्टिकली क्या है कि जब भी आप ये यूज करेंगे तो उस टाइम पे यू आर नॉट गोइंग टू डू इट मैन्युअली. you have this Excel, you have Minitab, you have other software also. There you don't need to give this formula. Basically automatically that is already functions are set. Excel में जाके हम std लिखते हैं. ठीक है. तो वहां पे ये आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा कि std dv जो है that is for the standard deviation, so you don't need to remember this formula. So forget about the formulas and all at this point of time. Yeah, definitely if you have self interest then you can definitely understand these formulas.